अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम होस्ट करेंगे अपनी एक छोटी सी वेबसाइट, एक टूल बेसिकली इनटू द गिटहब एंड मेक इट लाइव। एंड आल्सो आप लोग अपनी कोई भी आप लोग की हो पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, सो यू कैन easily make it live and host them through GitHub. So this is a complete guide, and within few steps you can easily make it live. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक बनाएंगे अपनी एक रिपोजिटरी। लेट्स नेम इट आर्म साइंसेस एग्रीगेट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अपनी एक छोटी सी मे बी टूल है विच कैलकुलेट द एग्रीगेट ऑफ आई एम साइंसेस यूनिवर्सिटी। सो एवरी वन कैन यूज़ दिस टू कैलकुलेट हिज एग्रीगेट, एंड इसमें मैंने यूज़ किया है जावास्क्रिप्ट, एंड यू कैन यूज़ अदर एज वेल, राइट। सो हम इसे लाइव करेंगे and through some commands we can make it live. So हम यहाँ पे पब्लिक करेंगे and readme को वैसे ही छोड़ेंगे and create a repository. So repo तो यहाँ पे बन गई है, and we have two steps to upload our files. The first one we can use git bash, and through such commands we can upload those files. commands हमारे पास ये हैं, and इसके अलावा भी हम लोग simply upload files, and then you can easily select those and press enter. यहाँ पे commit changes and our files have been uploaded, and now the final step to make it live. So हम setting पे जाएंगे, सेटिंग के बाद पेजेस, एंड पेजेस के बाद मेन एंड सेव। दैट्स इट। दिस इज क्वाइट सिंपल, राइट। विथ फ्यू स्टेप्स वी कैन मेक इट लाइव। सो दैट्स इट। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे एंड विद इन फ्यू मिनट्स हमारी वेबसाइट टोटली लाइव हो जाएगी, एंड एनी वन विद द लिंक कैन एक्सेस दिस वेबसाइट। कैसा दिया? सो let's wait. Let's wait for the website to live. हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। You can access this with this link and also with this link. 2 and 5. Sorry. Yes, this is working very good. It's live on GitHub. Thank you so much. Thank you for watching the video, and I hope आप लोगों के लिए अब easy होगा अपने portfolio को live करना. Thank you so much. Have a good day.